huge topic. Yes, yes. That only photoreceptor पे अगर हम बात करें Nobel Prize in Medicine and Science in 1981, Hubel and Thorson. Basically, these were two neuroscientists, physiologists. So let's pay tribute to them. They study the changes in amblyopia in lateral geniculate body and striate cortex. So first we will define amblyopia. Look at this picture. Word is so blunt and so dull without vision. So amblyopia is basically a combination of Greek words. Amblyos means dull or blunt, and ops means vision or sight. So basically it is a defective visual acuity in one or both eyes which persists after correction of the refraction error and removal of any pathological obstacle to vision. This is the basic definition. In unilateral amblyopia, when there is decrease to Snellen line visual acuity in the difference, then it's unilateral, while in bilateral, if it is less than 612. To know about the development of amblyopia, these are three periods in the development of the visual system. One is critical period, which is from birth to 6 months. The other is sensitive period, 6 months to 8 years, while susceptible periods 8 to 18. It means any deviation, refractive error, or sensory amblyopia, it is very critical in the first 6 months, which is difficult to treat. The first 6 months is critical period. That's why we urgently correct refractive error and go for cataract surgeries in these. While 6 months to 8 years, it is a sensitive period. If a child get obstructed vision or refractive error in this age, it is a sensitive period and amblyopia can develop. While very rare after 8 years, but still the child is susceptible up to 18 years. From my postgraduate resident in optometry, ये शख्सियत कौन हो सकता है? वन नूडन. मैं जब भी प्रोफेसर अबिद नवाज साहब या वन नूडन के बारे में सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ सर ये पाकिस्तानी वर्जन ऑफ वन नूडन. तो सर के कुछ लेक्चर हमने जो मोटिलिटी के और उसके न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी के अटेंड किए हैं, तो इस तरह कंसेप्ट मैं सोच रहा हूँ कि सर का भी इसी तरह कंसेप्ट क्लियर है जिस तरह. So pathophysiology is the next lecture, but for classification we will just touch it. Amblyopia is caused by abnormal visual stimulation during visual development, resulting in abnormalities in the visual centers of the brain. One is suppression, which is basically in the squint patients, and the other is pattern distortion and high refractive error and sensory amblyopia. These are different causes. We will divide amblyopia in different causes. One is difference in sharpness of vision between two eyes, which is anisometropia. The other is visual deprivation, congenital cataract, congenital ptosis, strabismus, common cause, high refractive error, bilateral ametropic patients में. So we will classify amblyopia into strabismic, monocular pattern distortion and binocular pattern distortion. मोनोकुलर पैटर्न डिस्टॉर्शन में एनाइसोमेट्रोपिया आता है, मीडिया ओपेसिटीज़ यूनिलेटरल जो होते हैं, और अक्लूजन यूनिलेटरल जो वो होते हैं जिस तरह कार्नियल ओपेसिटी और या टोसिस. बाइनाकुलर में एमेट्रोपिया, हाई रिफ्रैक्टिव एरर, एंड बाइलेटरल मीडिया ओपेसिटीज़, बाइलेटरल कार्नियल ओपेसिटीज़ आर कंजेनिटल कैटरेक्ट. द another one is, fourth one is idiopathic. But basically it is not idiopathic, we will discuss later. Strabismic amblyopia, it is because there is two images come from the two eyes, so suppression is the main mechanism of amblyopia development. Congenital esotropia, infantile esotropia is common cause. Accommodative esotropia, both element. One is the hypermetropic error and the other is deviation is the cause of amblyopia development. It is very rare congenital exotropia, but it is amblyogenic because from in the critical period or sensitive period it occurs. Acquired childhood tropia after 2 years or 3 years. Microtropia. In a corrected squint patient, this is the most common
cause of amblyopia. Looks like straight, but there is slight esotropia or exotropia, so there is central scotoma and suppression. Intermittent exotropia is very rare because mostly binocular single vision maintained in the this case. Monocular पैटर्न डिस्टॉर्शन में दोनों मैकेनिज्म इकट्ठे आते हैं, सेपरेशन और पैटर्न डिस्टॉर्शन. वन इज स्टिमुलस डिप्राइवेशन. इसमें मीडिया ओपेसिटीज़, यूनिलेटरल कंजेनिटल कैटरेक्ट, यूनिलेटरल कार्नियल ओपेसिटीज़ आते हैं और अक्लूजन कंजेनिटल टोसिस. सो वी शुडंट वेट फॉर कंजेनिटल टोसिस इफ इट अक्लूड द विजुअल एक्सेस. अक्सर यही एक टीचिंग है कि अगर विजुअल एक्सेस कवर नहीं है और वो चेन एलिवेशन के साथ मेंटेन करता है तो स्कूल गोइंग एज तक होता है. लेकिन अगर मेजॉरिटी टाइम ये अक्लूड होता है तो वी शुड इंटरवीन फर्स्ट. Anisometropia is the difference between two eyes. It is a unilateral amblyopia and it is associated with 30% of strabismus. So these are the cutoff limit where hypermetropic anisometropia is more amblyogenic compared to myopic. If hypermetropia in between the two eyes is more than 1.5, it can cause amblyopia. जितना फ़र्क ज़्यादा होगा उतना ही amblyopia dense होगी. और मायोपिया, इन मायोपिया व्हेन देयर इज़ -3 एरर, दोनों में डिफरेंस हो, मतलब एक का -5 हो और दूसरे का -2 हो तो डेवलप हो सकती है. और स्टिग्मेटिज्म में भी 1.5 कट ऑफ लिमिट है. इससे कम है तो मतलब एम्ब्लायोपिया डेवलप नहीं होता. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर छोटे बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर में थोड़ा सा +1 स्टिग्मेटिक करेक्ट ना भी करें फॉर देयर टॉलरेंस तो ये एम्ब्लायोपिया काज नहीं करता. Bilateral pattern distortions is ametropia, high refractive error. Bilateral hypermetropia more than 5 diopter is amblyogenic, while astigmatism more than +2.5 diopter. Here I didn't mention myopia because in myopia near vision is clear. If it is very high, more than -7, -8, then it not come in the amblyopia because there is pathological changes of myopia also. So ametropic myopia is not usual cause of amblyopia. While media opacity is most common causes, if we treat it, still there is some degree of amblyopia with good surgical outcome. Van Noorden explained these two patients. Two children without strabismus in isometropia or a history of farm vision deprivation who had normal stereoacuity were amblyopic in one eye. In 1985, both patients respond well to occlusion. जब occlusion ख़त्म करते थे दोबारा रिकर वो हो जाती थी एम्ब्लायोपिया. लेकिन फिर 2010 एक में it should be another scientist, he said that it should be a diagnosis of exclusion क्योंकि 3 पेशेंट थे जिसमें एम्ब्लायोपिया वाज द इनिशियल डायग्नोसिस. फिर 2 में इस तरह आ गया कि एक में माइक्रोट्रोपिया आ गया और दूसरे में ट्रांजिएंट रिफ्रैक्टिव एरर था, मतलब बचपन में एनाइसोमेट्रोपिक थे, और एक में ओसीटी की वजह से सटल वो मेकुलर चेंजेस आई थी. तो वो कह रहे थे कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन शुड बी द काज ऑफ इडियोपैथिक एम्ब्लायोपिया. सो माइक्रोट्रोपिया ट्रांजिट बचपन में मतलब इनका एक आई में एनाइसोमेट्रोपिक था. लेटर ऑन ग्रोथ ऑफ द ग्लोब. बस दोबारा फिर ये uncorrected bilateral aphakias can cause amblyopia. So, anyhow, now we are putting IOLs in very small kids, but still, if we do simple lens metal aspirations, it is very important to advise the parents to wear, ask the patient to force the child to wear the glasses, because bilateral uncorrected aphakia can cause amblyopia. Exactly, madam. Similarly, meridional amblyopia होता है, ठीक है? Astigmatism वाला. और आप बताएंगे कि ये माइक्रोट्रोपिया हम कब कहते हैं, किसको कहते हैं, किसे माइक्रोट्रोपिया, हाउ वी डिफाइन. ये उनसे पूछ लेगी. टाइम क्या? प्रिज्म डायोप्टर. हाँ? अच्छा सही.
तो सर मैडम, मैं इस तरह अपने जो बायलेटरल इफेक्ट पेशेंट इनके वालिदैन को मैं कहता हूँ, अगर आप इनको चश्मा नहीं पहनाते तो ये उससे भी बदतर है, इससे भले वो पार्शियल कैटरेक्ट अगर है तो वो अच्छे हैं। बिल्कुल। इवन ये भी रिकमेंड है कि अगर 3 मास या आफ्टर दैट आप बायलेट कैटरेक्ट करते हैं तो फिर उनको 2 आवर के लिए फ्रास्टेड ग्लासेस अल्टरनेट की ये भी साथ यूज करें से कि फर्स्ट 3 मास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विजन डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी आप कंटिन्यू रखें जब तक आपकी विजुअल एक्टिविटी प्रॉपर असेस नहीं कर सकते कि 3 पेयर्स आप देंगे, एक में दोनों में इफेक्टिव ग्लासेस देंगे, फिर एक पेयर में राइट में आप फ्रास्टेड लेफ्ट में नंबर, दूसरी पेयर लेफ्ट में जो है फ्रास्टेड राइट में नंबर और अल्टरनेट डेट पे 2 आवर पे ये ग्लासेस। This is very important. Now coming to the epidemiology of amblyopia, it's a leading cause of visual impairment in children and adults. Why it's a leading cause? Because it is caused by squint, refractive error, congenital cataract, traumatic cataract in childhood. So amblyopia is very common during childhood with a worldwide prevalence ranging from 0.2% in some studies to 6.2%. This study done in Lahore in 200 students of a school in Lahore was published in PGO. Pakistan were examined for visual impairments. In 200 में 3% of them were found to be amblyopic due to strabismus and anisometropia. Another study from Karachi Dow University, total 2,500 children were screened in OPD. It is a hospital-based study. 6.7%, the highest prevalence amblyopia came in the 2,500 children. हॉस्पिटल बेस्ड है, तो स्टडीज सारे हॉस्पिटल बेस्ड ही हमारे उसमें हैं। तो from 3 to 13 years. In hospital जो हॉस्पिटल में आए थे डव यूनिवर्सिटी की फ्रीक्वेंसी सर 64% ऑफ schools की वजह जी 64% were female and 36% were male. These are the different causes of in this Al-Khairi. Isometropia was 36, meridional was 36%, mixed 24%, anisometropia 8.8 and squint 3.6. इसमें यह है कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था इसकी जो कंजेनिटल कैटरेक्ट और इस तरह की सर्जरी की हिस्ट्री जिनकी थी तो वो एक्सक्लूड किए थे ना, इस वजह से वो कंजेनिटल कैटरेक्ट वो सेंसरी वाला नहीं आया इसमें। Just for my own knowledge, go to the back side. This isometropic is ametropic. Ametropia. This is another word for it, na? Ametropic, sorry, ametropic. Isometropia. Like Same. high refractive errors, no? High refractive error. Yes, this is the other word for it. Another study from same Karachi where males were higher as compared to female. 60% of amblyopia, frequency of amblyopia in isometropia, in isometropic patient, तो इसमें ये 60% were amblyopic. This study done in our department, Mufarriq Shah sahab, total 2-year study, total 316 children of amblyopia were screened, and 120 having strabismus, 136 have anisometropia, while 60 have combined mechanism. This is latest study from MH in 2021, which studied the refractive error and amblyopia in strabismus patient. Amblyopia was still 60% in these cases, while the amblyopia was unilateral and almost 90% was 10% were bilateral. Astigmatism was the major cause of amblyopia, which mentioned that meridional amblyopia, and hypermetropia was 36%. This is a meta-analysis study. The prevalence of amblyopia is higher in males worldwide than in females. It is usually unilateral and is the most common cause of vision loss and monocular blindness in children. In 2018, 37 studies के meta-analysis जिसमें pooled prevalence of amblyopia they suggested 1.7%,
varying from 0.5% in Africa to 3.67% in Europe. Another study reported the pooled prevalence of amblyopia less in Africa, moderate in Asia, and 2.4 America, and highest in Europe. Fu et al. These are the Bowden et al. Studies in pooled prevalence of amblyopia based on countries. सबसे ज़्यादा जो है वो यूरोप में है, उसके बाद फिर अमेरिका में है, इसके बाद फिर एशिया और ये. तो आई विल कॉल इट दैट दिस इज़ बेसिकली द अफ्रीका वाले जो हैं ये दिस इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग. स्क्रीनिंग सही नहीं होगी और हमारे यहाँ जो कम है, वरना हमारे इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है. Meta-analysis of Bowden et al. Revealed a significant difference in the prevalence of amblyopia between boys and girls, with a higher prevalence in boys. It is in contradiction with Fu et al. Who reported a higher prevalence in girls. इसमें देखिए नाइजीरिया में एक स्टडी रिपोर्ट हुई जिसमें सारे मेल्स थे, तो इसमें इक्विटी और जस्टिस उसकी जो शायद वहाँ पे ख़वातीन बिल्कुल हॉस्पिटल जाती नहीं है. Another study from College of Optometry and from Hawassa, Ethiopia, they study different causes of amblyopia. Anisometropia still on the top, meridional highest, strabismic जो है वो कम, आइसोमेट्रोपिक या एमेट्रोपिक वो उसमें 12.5% थी. Anisometropia is the most common cause of amblyopia, which is fortunate because it is the most easily treatable form of amblyopia. Litender et al. Stated that strabismus might be a more common cause in non-Hispanic Caucasian than in Asians. Now this is the impacts of social impacts या impacts of life. मैं सिर्फ पुख्ताना उड़ान दिया. My nickname in grade school was Salamander because I have a lazy eye, squint की वजह से. So these are all bullying from the classmates और ये चीज़ें. Veselki, Budzanika et al. Revealed that reduced participation in sport because of amblyopia, adverse general and mental health and well-being were all independently associated with persisting amblyopia. जिसमें the strongest association in the youngest cohort, जो सबसे young होता है उसमें ये चीज़ें. Another is poor educational performance amblyopic patients में. Unemployment. एज अ क्लिनिशियन हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि ये पीएफ के टेस्ट के लिए गया था या रिक्रूटमेंट के लिए गया था, तो कुछ के तो रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं. सम केम आउट टू बी एम्ब्लायोपिक ड्यू टू माइल्ड स्ट्रैबिस्मस और एनिसोमेट्रोपिया, तो वो बड़े अपसेट होते हैं. एम्प्लॉयमेंट उनको इस तरह की वो नहीं मिलती. सोशल प्रॉब्लम्स भी है, ख़ासकर जब स्क्वेंट हो साथ में. शोर नॉलेस्ट है इंग्लिश. आई वॉज बर्न टू लेट फॉर स्ट्रीम ट्रेन्स एंड a lazy eye meant I have never been an astronaut. So severe amblyopia can be eliminated as a public health problem. This goal will require improvement in public awareness, better screening protocol at the level of primary care, and full access to medical care for at-risk patients. So the take-home message is, with early screening and diagnosis, the social and economic burdens caused by amblyopia can be reduced. Appropriate and early therapy can help us achieve good visual outcome. So screen your child before amblyopia develops, and amblyopia is preventable and treatable if detected early. Thank you. Irfan, it was a very good presentation. Somebody else is going to discuss how we diagnose an amblyopia in a patient, or it was your job? Somebody else is going to? No, madam, ये सिर्फ epidemiology and classification. इसके बाद पूरी वो topic है. You said that in this myopia, it agreed that it's not usual cause of amblyopia, but we do see a lot of, patients, especially female patients, they come to us and they never use glasses with myopic errors, and they are amblyopic, say in 18, 19, 20 years, they will come to you and you give them. So why is that? सर इट्स नॉट एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन इन आइसोमेट्रोपिया में तो होता है, लेकिन बाइलेटरल एमेट्रोपिया में जिसमें हाई मायोप हो,
तो वो उसमें कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। जिस तरह आप कहते हैं कि 10 तक अगर किसी का, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ कम है क्योंकि बहुत सौ रिसर्च में इसलिए इन्हें कि बाहर के एजुकेशन रेट ज़्यादा है, वो पढ़ते हैं तो नज़दीक का उनको, हमारे जितनी भी ये इलिटरेट होते हैं मेजॉरिटी चिल्ड्रन इलिटरेट में आप देखें उनको मायोपिया होते साथ एम्ब्लियोपिया भी होते हैं, मायोपिया के साथ भी है, इसलिए कि वो नज़दीक का कुछ काम नहीं करते, यूज़ ही नहीं करते हैं। जो एजुकेटेड है आजकल जो सिस्टम आया है, इवन जो इलिटरेट भी है, तो शायद फ्यूचर में इरफान की बात सही हो, ये मोबाइल की वजह से फिर उनको जो है मायोपिया डेवलप नहीं होगी लेकिन और प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये काफ़ी है जो पुराने पेशेंट है This is फंड very useful, probably all of us are ये जो seeing. जो कहते हैं जो कंपैरिजन ये नहीं है कि मायोपिया में होगा नहीं, हाइपरमेट्रोपिया कंपेरेटिव सर, इट्स ये मायोपिया में कम। This is बच्चों का जो बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो 1 2 3 years तो they most of the time is most of their work is near, तो उनको distance की जरूरत नहीं होती। मैं ख्याल इस एज में मायोपिया में एम्ब्लायोपिया डेवलप होना जो थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब वो बड़े सर जब वो बड़े होते हैं विजुअल डिमांड उनकी ज़्यादा होती है, they look at far, most of their work is at far, so अगर यही मायोपिया if persist at their later age they can develop एम्ब्लायोपिया। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा सेटअप चेंज है ना, हमारे पास 30 इयर्स में एक औरत आ जाती है कि मुझे नजर नहीं आ रहा, आप देखोगे तो उसको -12 13 मायोपिया, हाँ, अब उसको 30 साल में तो याद आया कि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उसको एम्ब्लायोपिया होना ही है ना, उसको तो हो चुका होता है, तो इट इज देखो इट इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। The risk of amblyopia development is very high in ametropia due to hyperopia, but it is less in myopia.